Hello students, welcome to CHSE Pathshala. This class is completely dedicated towards all the question answer, all the possible question answers that will be coming in your exam. So आज आमे से सब जिंस डिस्कशन करिबा जेउ जेउ क्वेश्चन पॉसिबली तुमरो परीक्षा रे आसी पारिबो. तो से भीतर को जीवा आगरु आमे के डिस्कस करनबा तुम मानकर एग्जाम रो ईच चैप्टर रो वेटेज केते, ईच पार्ट रो वेटेज केते according to the syllabus given by CHSE. जदि मैंने के सिलेबस ऊपर ध्यान दब तुम मैंने नोटिस करि परिबो पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी जोटा कि यूनिवर्सल आइडियाज बा थियोरीज ऊपर कंप्लीटली बेस्ड अछि. 30 marks out of 70 will be coming from part A and other 30 marks will be coming out of part B, India physical environment. So आमे ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास रे यूनिट 1 ऑफ आवर सिलेबस जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन कंप्लीट करि सरचंते. आई होप तुम माने समस्त से क्लास विजिट करिथिबो एंड तुम माने बहुत गुडा डाउट्स रही जाइथिबो किबा पॉसिबल क्वेश्चन रो होप रे थिबो जे कि हां क्लासेस तो सरी गला किंतु एग्जाम रे आसिला भली क्वेश्चंस कोन कोन अछि, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एंड दिस क्लास इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू दैट. तो ईच चैप्टर सरला परे आज द कोर्स स्टेटेड अर्लियर आमे सबु चैप्टर रो क्वेश्चन एंड आंसर गोटे सेशन नो. दिस इज द क्लास. तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन आमे आज ए चैप्टर तो सारी दैछंती, एबे आमे ताकू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो नोटिस करिबा. We will discuss some short answer type questions, some MCQs and some of the long answer type question and किछिटा value based बा high order thinking skill वाला question भी अछि. सो जेहेतु कंप्लीट बुक रो 30 मार्क्स आसुछि तो पॉसिबिलिटी बहुत कम जे फर्स्ट चैप्टर रो ही 15 to 20 मार्क आसीबार. पॉसिबली शॉर्ट आंसर दुईटा आसी पारे, लॉन्ग आंसर गोटे आसी पारे किंबा MCQ आसी पारे, बट सेही पॉसिबिलिटी को नेकी आमे जेमिति कंप्लीटली प्रिपेयर हेथिबा दरकार. So with that thought, we will start today's session. It is completely about question and answers of chapter 1, Geography as a Discipline. आगुआ कही रखुची this is the only chapter in your book which is philosophical in nature. तुम मानकु थॉट कौन, लोक मानकर चिंताधारा कौन, जियोग्राफी कौन से विषय ए चैप्टर तुमको अवगत कराई थाए. So this question is more or less related to your moral values. How do you think while keeping geography in your mind? Okay, I will start करिबा MCQ. First question is एटा गोटे बहुत हाई वैल्यू रो क्वेश्चन, ये बहुत थोड़ा रिपीट हेच. Okay, this is the first thing you read when you start the chapter. Who coined the term geography? Okay, there is nobody, you know, a question आउ किसी अलगा फॉर्म नहीं जे फादर ऑफ जियोग्राफी किए एमती किसी आसे नहीं. डायरेक्टली हु गेव द टर्म जियोग्राफी? इट इज वेरी इजी. इराटोस्थेनिस मन रखि नबो. दिस इज नॉट वैल्यूएबल एज ए MCQ, दिस इज आल्सो वैल्यूएबल इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. किसी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ले जते बेले तुम माने किसी इंट्रोडक्शन लिखतो, लेट्स सपोज गोटे क्वेश्चन आसिला राइट डाउन द डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी. So सेतेबेले तुम इंट्रोडक्टरी पार्ट रे लिखि परिबो Eratosthenes is the person who gave the what term geography. Okay, this was a very easy question. Let's move to another one. Which one of the following feature can be termed as physical features? जेतेबेले आमे जियोग्राफी को डाइव इन करंती, तारो अप्रोचेस को पढंती, टाइप्स एंड सब डिविजन्स गुडा को जानती, सेतेबेले आमे नोटिस करथांती फिजिकल एंड ह्यूमन. सो फिजिकल फीचर से गुडा को जीवो जे गुडा को नेचर इन इट्स ओन वे रे क्रिएट करिछि बा प्रकृति जो जो जिंस को बनाइछि से सब फिजिकल फीचर्स रे जीवो. तो एथरे ऑप्शन ले अछि पोर्ट, रोड, प्लेन एंड वाटर पार्क. पोर्ट ह्यूमन बनि थाए निजर पर्पस पई जेमति कि इंपोर्ट बा एक्सपोर्ट पई, रोड बनि थाए यातायात पई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पई, वाटर पार्क बनै थाए अम्यूजमेंट बा निजर खाली टाइम रे आनंदमय समय बिताइबा पई. तो बंचिला प्लेन. प्लेन को ओडिया रे कहा जाए समतल भूमि. सो दिस इज द थिंग व्हिच इज क्रिएटेड बाय नेचर. सो दिस विल बी द आंसर सी. दिस फीचर कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर. ओके, दिस इज ए टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. आमे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन पढंती. ओडिया जे तुम कहबो समतल भूमि अछि, माळ भूमि अछि, पहाड़ अछि. So this is the physical feature.
Let's move on to next question. This is the match the following type of question. So this match the following is completely related to synthesis of geography by relation of geography with other fields. So आम ऑलरेडी जानी जो पढ़ुले जियोग्राफी एज ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन तो से आम नोटिस कले कि बहुत गुड़ा नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस सहित सोशल साइंस सहित कौन लिंक अच्छी जियोग्राफी तो सेमती आम से चैप्टर को रिकॉल करके क्वेश्चन को सॉल्व करवा मेटेरियोलॉजी जे कि मोस्टली वेदर क्लाइमेट से सब जिन सहित डील करे that will be covered under what climatology. Okay, this is the branch of what science and this is the branch of geography. The second one is demography. Demography माने जानी था always population. Okay, population रो sex ratio हो density हो occupation structure हो से सब जिनस डील हुए कुदरे डेमोग्राफी रे जोटा कि रिलेटेड टू व्हाट population geography. नेक्स्ट है सोशियोलॉजी. देखो सोशियोलॉजी और सोशल वर्ड दुईटा देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर और डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ ईच अदर तो हमको एटे अधिक कष्ट करियो पड़िबो नाही. दिस वन विल बी थर्ड एंड फोर्थ वन इज पेडोलॉजी. जदि तुम मानू के जाना नहीं पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल. सॉइल रो क्वालिटी रु नै कि डिग्रेडेशन केमिति कंजर्वेशन कर हबो दैट इज डेल्ट विथ पेडोलॉजी. तो बंचिला गोटे जिंस से हला सॉइल जियोग्राफी. ये तो थिला डेमो. तुम माने जदि तुम बुक को देखिबो गोटे कंप्लीट पेज डेडिकेटेड अछि साइंस रो रिलेशन सॉरी जियोग्राफी रो रिलेशनशिप विथ अदर साइंसेस और अदर डिसिप्लिन. तो एमिति टाइप रो जदि क्वेश्चन तुम मानकर एग्जाम रे आसे एटलीस्ट आई होप कि तुम माने एलिमिनेशन मेथड यूज करि परिबो. जो गुडा को आसुची आगे ताकू सॉल्व करि नबो. लेटर ऑन यू विल गेट ए क्लियर आइडिया कि बाकी जो दुटा बंचिला से माने कहा सहित लिंक्ड अछंती. बहुत गुडा को ब्रांचेस अच्छी जो मैंने सेम टर्म कैरी करते जमीक कि सोशल और सोशियोलॉजी. मेटेरियोलॉजी जदि तुम टे माइंड रखियो पाणीपाग सूचना ये सब जिन तुम मैंने न्यूज रे पढ़ुव दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट. सो जिते तुम मैंने गोटे कनेक्शन एस्टाब्लिश कर विथ कॉलम ए विथ कॉलम बी देन तुम मैंने इजिली आंसर करि परिबो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वी स्टडी फिजिकल जियोग्राफी. तो फिजिकल जियोग्राफी में कौन कौन पढ़ती जितेबाला आम सब डिविजन कले सिस्टमेटिक अप्रोच अंडर रे फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी. ओके, सो फिजिकल जियोग्राफी रे ऑलवेज नेचर रो जिंस गुडा आम पढ़ती जमती कि वेदर सॉइल एटमॉस्फेयर. ओके, तो वेदर क्लाइमेटोलॉजी रिप्रेजेंट होगला सॉइल पेडोलॉजी एटमॉस्फेयर हाइड्रोलॉजी. सो ये जब भी बायो जियोग्राफी बा एनवायरनमेंट भी था से भी पॉसिबल ही था. Whereas जदि आम अलग ऑप्शन मान को ध्यान रखिबा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज सॉइल पार्ट आसी जाउची कोथरे फिजिकल रे. ओके, पॉपुलेशन इंडस्ट्री ए दुटा आम पढ़िले डेमोग्राफी बा पॉपुलेशन जियोग्राफी अंडर एटा आसी जाए दैट इज अंडर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ओके, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट ये भी ह्यूमन जियोग्राफी रो ही पार्ट. ओके, जदि फिजिकल जियोग्राफी बदल रे ह्यूमन जियोग्राफी ऑप्शन थाए ए तीनटा भितर कोटा भी तुम माने चूज करि पारिबो. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर इकोनॉमिक जियोग्राफी. ओके, इकोनॉमिक जियोग्राफी रो मीनिंग तुम माने बुझे दोची. नॉर्मली लिवलीहुड बेस्ड क्वेश्चंस बा लिवलीहुड बेस्ड सब्जेक्ट मैटर हम एथिरे पढंती. इकोनॉमिक जियोग्राफी रे ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी क्वीनरी इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. ओके, तो एथिरे कोनटा हे जिवो which is not studied under economic geography. देखिबा कौन कौन एग्रीकल्चर डेफिनेटली because agriculture is also called as what backbone of the country. एग्रीकल्चर रो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करंती जोटा कि प्राइमरी एक्टिविटी रे इंक्लूड हो जाए. नेक्स्ट है इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कोद रे आछिबो इकोनॉमिक रे आछिबो. थर्ड हला ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस सेक्टर otherwise called as tertiary sector. Okay, so बंचिला कोटा population. आमे गोटे क्वेश्चन आगु पढ़ले population is part of what human geography. Number of people residing in a particular area during a particular period of time is called population. Okay, तो population खाली कौन सी भी कौन इकोनॉमिक जियोग्राफी रो पार्ट नुहे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following is not a sub branch of biogeography? First हमें recall करना होगा what is biogeography. जदि हमें chapter को recall करिबा, biogeography is the bridge between physical geography and human geography. It is the testament of how human behave with its environment or physical environment. Okay, तो जदि हमें एथिरे देखिबा तीनटा ब्रांच अछि, चारटा ऑप्शन अछि, obviously गोटे एलिमिनेट हबो. तो जीव जियोग्राफी जोटा की animals and fauna उपरे completely based. Next plant geography जोटा की flora उपरे based बा all type of plant species उपरे based. Next ला human geography. देखो तुम मान को फर्स्ट स्टेटमेंट रे मु कहली biogeography is the branch between physical geography and human geography. Okay, so this will be not a part of biogeography, whereas climate geography is a factor which is responsible for these two. Okay, so जदि एमती क्वेश्चन आसिला तम माने ह्यूमन जियोग्राफी को ऐड करि परिबो, किंतु क्लाइमेट जियोग्राफी इज नॉट कंप्लीटली स्टडीड अंडर व्हाट बायोजियोग्राफी. इट इज कंप्लीटली स्टडीड अंडर व्हाट फिजिकल जियोग्राफी. तो ह्यूमन ऑलवेज एठी ऐड ही गला, बुझि परछो. सो it is not a sub branch of biogeography, but it is studied. Okay, so the answer will be climate geography. Okay, we will move on to next question. Geography is concerned with the description and explanation of the areal differentiation of earth surface. Who said it? तुम मन को जदि क्लासेस तमे रिकॉल करिवो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन बा मीनिंग परे दुईटा डेफिनेशन दे जाइथिला स्ट्रेट फ्रॉम द बुक. तो वन ऑफ देम कंटेंट व्हाट एरियल डिफरेंशिएशन. देखो एठी आउरी क्लीन कर दबा. हेरोडोटस हे नथिबे. एराटोस्थेनेस ओनली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज़ से जियोग्राफी टर्म को कॉइन करथिले. गैलीलियो फिजिक्स जो माने पढिथिबो टिके टिके, तो गैलीलियो तांको सहित रिलेटेड बंचिले कोन रिचर्ड हार्टसॉन. So this will be the correct answer. Okay, rest of them will be not. Okay, which of the following is not studied under economic geography? Again I think a question ta repeat he jaichi, ar answer आउ थरे कहि दोछि population. Okay, next question. Geography studies the different phenomena, usually different part of earth surface. Who gave this definition? तो टिके आगुरु कहली तुम मानकु दुईटा डेफिनेशन स्ट्रेट आउट ऑफ योर बुक रे अछि. देखो हम्बोल्ट को जाना जाए से सिस्टमैटिक अप्रोच देइ छथि बोली. ओके, रैडजल जाना जाए कोन पई जैसे ह्यूमन जियोग्राफी रे तांको टिके अधिक कोन कंट्रीब्यूशन अछि. सिंपल करबी तुम जदि ह्यूमन जियोग्राफी पार्ट देखिबो, ह्यूमन जियोग्राफी पार्ट रे से बहुत कोन कंट्रीब्यूट अछि, तांकर सेही पार्ट रे हम अधिक पढि. तो बंचिले कोन अल्फ्रेड हार्टनर. Okay, just a second. So right answer will be Hartner. Sorry for the delay. So जो चारिटा लोक मनकर ना अछि तुम माने मोस्टली एमानकर कंट्रीब्यूशन को आज ए पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू ए लॉन्गर क्वेश्चन लिखि पारिबो. कंपलसरी नुहे मन रखिबा, बट एति मन रखथो जो हार्टनर एंड हार्टस्टोन जो अछंती दुई जण लोक तांकर डायरेक्ट डेफिनेशन तुम बुक रे जेहेतु अछि, आई होप तुम माने ताको मन रखिया को पड़िबो. ओके, which of the following is not studied under population? पॉपुलेशन जियोग्राफी हला कंप्लीटली डेमोग्राफी ऊपर डिपेंड अछि. तो डेमोग्राफी रो जा जा फीचर को हम स्टडी करंती से सब पॉपुलेशन जियोग्राफी रे भी स्टडी करंती. तो कोन कोन स्टडी करंती देखिबा. सेक्स रेशियो डेफिनेटली हमें क्यों करंती स्टडी करंती. माइग्रेशन एंड ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, माइग्रेशन माने मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताको भी हमें स्टडी करंती जोटा कि इट्स अ फैक्टर फॉर पॉपुलेशन चेंज. नेक्स्ट अछि पॉल्यूशन. देखो पॉल्यूशन नेसेसरीली नुहे
population geography पढ़िबा we study pollution but not as a what part of population geography से part है जाए environmental geography रे okay population density माने number of people per square kilometer that is also studied under population geography. Let's move on to next question. Who developed systematic geography? Always मन रखता this is a direct question which can be asked in your exam. आमे ऑलरेडी जानछंती कार्ल रिटर और हम्बल दुईटा ही लोक अछंती जो माने कोन सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच रो कोन सूत्रधर भाबे जाना जानती तो ऑब्वियसली मन रखता हम्बोल्ट ताको ना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सो से देथिले कोन सिस्टमैटिक जियोग्राफी जदि कार्ल रिटर विषय तुम देखिबो ये देथिले रीजनल जियोग्राफी सो जो दुईटा अप्रोच अच्छी दुईटा जाकर फाउंडर बा सपोर्टर मान ना तुम मन रखा पड़े बेसी हार्ड ना ओके सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन से विषय में पछे यार आंसर है कार्ल रिटर ओके under which approach is the world divided into regions at a different hierarchical level and then geographical phenomena in a particular region are studied obviously कार्ल रिटर को थ्योरी ऊपर हमें ना टिके फोकस करबा सिस्टमैटिक अप्रोच रे ऑलवेज कोन थाए रीजन रे डिवाइड हे न थाए ओके सेतरे कोन फिजिकल जियोग्राफी एज वेल एज ह्यूमन जियोग्राफी सेतरे इंटरेक्शन बा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडियाज पढ़ा जाए नेक्स्ट ला फिजिकल अप्रोच रे इट्स ए पार्ट ऑफ व्हाट सिस्टमैटिक अप्रोच जो हमें खाली नेचर वाला जिंस पढ़ते जैसे कि सैंड सॉइल क्लाइमेट ये सब जिंस डुअलिज्म this is also not the answer because region को जदि के particularly focus करके कौन से approach कौन आगु को बढ़ी था से हला regional approach by Carl Ritter okay under which approach a phenomena is studied world over as a whole तो आमे जो पूर्व क्वेश्चन टा डिस्कस कले तार एग्जैक्ट अपोजिट सेठी आमे कोन रीजन को फोकस कले एठी आमे फेनोमेना को फोकस करियो सो फेनोमेना को फोकस कला माने एटा ऑब्वियसली तमे जानि थाओ सिस्टमैटिक अप्रोच रे ही जीवो हला रीजनल अप्रोच तो आमे काटि दबा ओके डुअलिज्म भी काटि दबा बंचिला सिस्टमैटिक अप्रोच एंड फिजिकल अप्रोच सो फिजिकल अप्रोच टा हला पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच ओके बुझि परछो सो फेनोमेना एठी पर्टिकुलरली देनी ह्यूमनिस्टिक फेनोमेना कि फिजिकल फेनोमेना तो जोटा पाई कि हमें फिजिकल एस्पेक्ट अप्रोच टा को भी क्रॉस चेक करि परिबा सो इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच ओके Next question, which one of the following question is related to cause-effect relationship? This question is completely related to the core question of geography that are what, where and why. जो तीनटा core question अच्छी geography रो, this question is related to that. So इतने कौन अच्छी cause-effect relationship. So that means this will describe ये बुझेबा को चेष्टा करिवो जे हां गोटे जिंस काहे की अछि ओके सो ऑब्वियसली यार आंसर व्हाई इज यदि कॉज इफेक्ट बदल रे लोकेशन बा स्पेस तांता त नहीं तांता होयर बुझि परछो डेफिनेशन करिवो कहिदिले व्हाट टेंपोरल कोन सिंथेसिस से गेले जानि तांते व्हेन तो आंसर हिजबो व्हाई Which one of the following discipline attempt temporal synthesis? देखो इना temporal कथा आसीगला. Geography is a special synthesis topic, whereas history is called as a temporal synthesis subject because temporals means time सहित से माने based अछि. Sociology नो है, geography देखो कहदेली special है जीवो. Anthropology human behavior को study करे तो आंसर है जीवो history. Temporal synthesis. Okay. सो कहवा गले एठी हमें किछिटा एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन डिस्कस कले लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जोटा के तमे 30 वर्ड्स लिमिट रे लिखि पारिबो मोस्टली एमिति क्वेश्चन ले कोन थाए डेफिनेशन थाए रीजन पचारि थाए किंबा कोनोसी जिंसर मीनिंग पचारि थाए ओके काइंड ऑफ डायरेक्ट आंसर टाइप रो थाए तो माने दुईटा लाइन रे भी एक क्वेश्चन रो आंसर लिखि पारिबो एमिति टाइप रो क्वेश्चन ले कोनोसी इंट्रोडक्शन दवा निहाती दरकार न थाए you can write direct answer okay so first देखि नबा कोन कोन possible questions अछि
फर्स्ट वन इज डिफाइन जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी रो डेफिनेशन डिफरेंस कला डिफरेंट डिफरेंट वे रे देइचंती जदी भी काहा को ए सब मन रखिबा कष्ट होची सिंपल रे तमे जियो आउ ग्राफे जो रूट वर्ड अछि तार मीनिंग भी लिखि देले हबो। जियो मीनिंग अर्थ, ग्राफे मीनिंग डिस्क्रिप्शन, together you can form a simple definition of geography that is called geography is the branch of knowledge which describes earth and the phenomena occurring over it। तो खाली अर्थ रो डिस्क्रिप्शन तो कौन रो डिस्क्रिप्शन आमे दउचंती अर्थ रे होथबा फेनोमेना नेचुरल हो ह्यूमन मेड हो किछि भी हो से विषय आमे पढंती। तो तुम माने चाहिले हार्टस्टोन बा हाथन करो कौन लिख परिबो डेफिनेशन लिख परिबो बट जदी काहा को मने रहू नाही यू कैन राइट द सिंपल डेफिनेशन जियो आउ ग्राफे रो मीनिंग सहित। ओके आई थिंक दिस इज इजी क्वेश्चन जोटा कि तुम माने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप रो भी एको नोटिस कर परिबो एंड दिस कैन बी एडेड एज ए व्हाट इंट्रोडक्शन टू ए लॉन्गर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट ला व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी जियोग्राफी। जदी तुम माने क्लास भल रे पढिथिबो हम ऑलरेडी दीटा बहुत थोरो एमसीक्यू रे भी डिस्कस कर सारलेनी सिस्टमैटिक अप्रोच एज वेल एज रीजनल अप्रोच बेसी तमे एलाबोरेट करबा दरकार नाही। सिस्टमैटिक अप्रोच रे जस्ट ऐड कर दबो कोन कोन इंक्लूड हुए जेमिति कि फिजिकल एंड ह्यूमन फिजिकल ले दुई तीनटा ऐड कर दे पारिबो सॉइल क्लाइमेट ओके जियोमॉर्फोलॉजी व्हेरेज तमे जदी कोन ह्यूमन रे ऐड करि पारिबो सोशल कल्चरल ए सब जिंस ओके। सेमती रीजनल जियोग्राफी भी तुमने ऐड कर पारिबो जे माइक्रो मेसो जो रीजन को आगे आइडेंटिफाई करा हुए एते डिटेल को जीव नाही बस सिंपल ले सार दबो टू टाइप्स रो अछि गोटे हला सिस्टमैटिक ता साइड रे कोन कोन से इंक्लूड करे दुई तीनटा एग्जांपल एंड रीजनल अप्रोच। ओके who introduced systematic approach? This is a direct question we discussed in the MCQ. Answer will be Humboldt. Okay whereas the other ultada pochara haba who was the profounder of regional geography? Carl Ritter. Who next question is what is studied under environment geography? देखो एनवायरनमेंट रो मीनिंग हला परिवेश तो परिवेश रिलेटेड जिंस ओडा पढाओ जेमति कोन पॉल्यूशन डिग्रेडेशन तार कंजर्वेशन तो ए सब जिंस कोन सब्जेक्ट मैटर कहार एनवायरनमेंट जियोग्राफी रो। तो तुम माने बेसिक आंसर लिखि परिबो द सब्जेक्ट मैटर व्हिच आर स्टडीड अंडर एनवायरनमेंट जियोग्राफी इंक्लूड्स कोन पॉल्यूशन हे परिबो डिग्रेडेशन हे परिबो कंजर्वेशन हे परिबो ओके इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन हे परिबो बुझ परछ ए सब जिंस तुम माने ऐड करियो। तो दिस इज आल्सो ए प्रीटी इजी आंसर। व्हाट इज स्टडीड अंडर बायोजियोग्राफी? देखो डायरेक्टली एठी आगे डेफिनेशन लो तमे स्टार्ट करिवो। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी इज द इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। देन तुम माने ऐड कर परिबो एठी कोन कोन पढा जाय आमे ऑलरेडी जानछो कि तीनटा सब ब्रांच अछि जेमति कि जू जियोग्राफी लैंड जियोग्राफी एंड इकोलॉजी। ओके तो से सब विषय रे तुम माने एठी मेंशन करबो। ओके 2 ରୁ 3 लाइन मैक्सिमम वर्ड लिमिट 30 ओके बेसी लिखिबो नाही 30 वर्ड्स लिमिट रे काइना अत्यधिक लिखि देले भी गोटे खराब इंप्रेशन पड़ी थाए। ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू द व्हाट इज स्टडीड अंडर जियोमॉर्फोलॉजी। देखो जियोमॉर्फोलॉजी रो मीनिंग तुम मानको मु आउ थरे बुझी दउ देखो जियो रो मीनिंग हला अल्टीमेटली अर्थ मॉर्फोलॉजी माने इट्स ए प्रोसेस बाय व्हिच ए थिंग्स कम इनटू ए व्हाट शेप और साइज माने प्रेजेंट कंडीशन को आसीबा पई जो प्रोसेस अछि जियोमॉर्फोलॉजी रे हमें पढिबा लैंडफॉर्म आज जो स्टेज रे अछंती तांकर डिफरेंट स्टेजेस मूलरु से केमती थिले एबे केमती अछंती टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। ओके तो मॉर्फोलॉजी रे हमें तांकर फॉर्म गुडा पढंती जेमति कि हमें आगु को जो चैप्टर गुडा आसु सेदरे हमें पढिया माउंटेन केमती बनेला प्लेन केमती बनेला प्लेटू केमती बनेला सेमती रिवर सहित एसोसिएटेड मॉर्फोलॉजी कोन कोन अछि। तो लैंडफॉर्म विषय रे पढंती कोन जियोमॉर्फोलॉजी रे। सो जदि तमे ताको ऑफिशियल आंसर भाबे देखिबा जियोमॉर्फोलॉजी रो डेफिनेशन कहि परबो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ all the landforms present on earth surface then how they came into being what are their stages how they are formed agent of geomorphology से सब विषय रे पढिबा हमें। जदि कहा को पर्टिकुलर आंसर रो रिटन वाला पार्ट दरकार मो ए जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी जोड़ा तुम मन को टिके डिफिकल्ट होची लिखिबा पई तारो नोट्स
आंसर्स गुड़ाक प्रोवाइड करदेवी तो किसी पैनिक हवा दरकार नहीं व्हाट इज स्टडीड अंडर हाइड्रोलॉजी देखो हाइड्रोलॉजी मीनिंग है वाटर रियल्म वाटर रे कौन कौन आसीबो ओशन लो डिस्ट्रीब्यूशन आसी जीवो ओशन भीतर रहउतवा लाइफ आसी जीवो ओशन भीतर थिवा फिजिकल फीचर्स आसी जीवो ओके खाली ओशन नुहे वाटर को नेकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जेमति कि रिवर हे परिबो ओके वाटर साइकिल हे परिबो बुझो हाइड्रोस्फीयर कंप्लीटली हाइड्रोलॉजी अंडर रे आसी थाए माने ऑल द फेनोमेना दैट आर रिलेटेड टू वाटर आर स्टडीड अंडर व्हाट हाइड्रोलॉजी ओके Next, move on to the next question. What are the main branches of biogeography? Very easy question. Plant geography, zoo geography, and ecology. तीनटा को तुम मेंटेन कर पारे इकोलॉजी बा एनवायरनमेंट भी लिख पारिबो होला आई थिंक एटा को हम ऑलरेडी डिस्कस करि सालेनी नेक्स्ट व्हाट इज स्टडीड अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन कले जोथरे हमें कोन जानले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऊपर ये पड़े देखो लोक मानकर एक्टिविटीज फॉर लिवलीहुड जेमति कोन प्राइमरी ही पारिबो ऑक्युपेशन जहाँ कहा जाए है सेकेंडरी इंडस्ट्री ट्रेडिंग सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर स्टडीड अंडर व्हाट इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब तुम मैंने आगर के नोटिस करते हो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इकोनॉमी इज ए प्रोसेस बाय व्हिच पीपल अर्न मनी फॉर देयर लिवलीहुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इजी चारिटा ही मात्र अछि तुम माने लिख परिबो आराम से जियोमॉर्फोलॉजी सॉइल क्लाइमेटोलॉजी ला ओशनोग्राफी ए सब लिख परिबो हला नेक्स्ट ला सब ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दिस इज आल्सो इजी वन किंतु बहुत गुडा को अछि जदि तुम मानको 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन उटा आसुची एटलीस्ट तुम माने पांचटा लेखिया पई पडिबो तुम मानको ओके कहि दोस्त तुम मानको सोशल हे परिबो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हे परिबो कल्चरल हे परिबो सो बहुत गुड़ाक अच्छी जो माने एनी ज्योग्राफी दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन तुम माने कहि परिबो ओके से सब कोथरे कवर हबो ह्यूमन ज्योग्राफी रो सब ब्रांचेस रे कवर हेई जीवो किंतु एति मन रखो फिजिकल ज्योग्राफी रो सब ब्रांचेस कले चारिटा निहाती लिखिबा को पड़िबो तुमको काना चारिटा ही मुख्य अछि ओके किंतु ह्यूमन ज्योग्राफी रो जेहेतु अधिक अछि मे बी तमे कंप्लीट न लखि कि एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखि देले तुम मानको मार्क मिलि जीवो ओके The next question is what are the recent techniques that help geographer to understand Earth surface better? So this question asks about the modern technologies or modern techniques or methodologies which are used by geographers. जदि तुमने present day रो हमें methods and technique वाला part रे पढ़िथिले जले branches of geography पढ़िथिले से तुमने GPS, GIS, LIS, remote sensing ए सब टर्म मने पढ़थिबो तो से विषय एटा कहिछि तो टेक्निक कोन कोन अछि देखो फर्स्ट ला क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से कौन कौन आसे स्टैटिस्टिक आसी जाए हला जदि तुम माने टेक्नोलॉजी अधिक जोटा के मॉडर्न वे रे अछि हला मैप मेकिंग पई हो किबा कोन सी जगह रो इंफॉर्मेशन जानिया पई होलु जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओके और लास्ट हला एलआईएस लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फर्स्ट जोटा कहली कोन क्वांटिटेटिव टेक्निक रे कोन आसीबो स्टैटिस्टिक्स ओके सो दीज आर द मेथड व्हिच हेल्प्स जियोग्राफर टू अंडरस्टैंड ए प्लेस बेटर केमिति तारो इंफॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाए ओके व्हाट डू यू मीन बाय एरियल डिफरेंशिएशन देखो एरियल डिफरेंशिएशन गोटे कंप्लीट डेफिनेशन नो कि आमे पढ़िले आगरो दुईटा क्वेश्चन आमे से विषय कले जदि काहाको सेटा मन रखिया पे कष्ट होची आई एम गिविंग यू ए सिंपल डेफिनेशन एरियल डिफरेंशिएशन मींस it states that how one place is different from another or it is similar to another okay केमिति गोटे जगह आ गोटे जगह सहित सिमिलर अछि as well as different अछि तो केमिति जाना पड़ियो फर्स्ट ला एटा ला बेसिक जे कि हाउ ए प्लेस इज सिमिलर खाली प्लेस कहि होबनी कहि परिबो जे इट इज रिलेटेड टू व्हाट फेनोमेना डायनामिक्स माने वेरिएशन हला अलगा कोन अछि हला but a simple definition तो माने मन रखो aerial differentiation means it states that how one place is different or similar to another okay then तो माने वो add करि परिबो it takes phenomenon occurring over two places into account to have a comparison and similarity okay that's all
एक्सप्लेन द चेंजेस अकॉर्डिंग द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन टा टिके मोरल बेस्ड क्वेश्चन हे जाउची केमिति मनुष्य निजर कोन सिविलाइजेशन रे निज टाइम रे चेंज आनी बुझिबा। आमे गोटे चैप्टर पढ़ले जोटे के चैप्टर गोटे पार्ट थिला ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर प्रोवाइड अस कोन opportunities, we human use that opportunities, okay? So for that हमें सेटा एक्सप्लेन करबा जे केमिति चेंजेस अकड़ला एक्चुअली जे तुम गोटे प्रिमिटिव सोसाइटी को इमेजिन करबो सेठी कोन डिस्क्राइब हिच ह्यूमन रो एब्सोल्यूट नेसेसिटी थिला घर दरकार थिला तो से केव रे रहउथिला बट लेटर ऑन विथ द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से कोन कला धीरे धीरे कैप्चर करबा स्टार्ट कला नेचर को। सो फ्रॉम ए गोटे ट्रांजिशन तुम मैंने गोटे सिंपल लिखि परिबो यार आंसर ट्रांजिशन फ्रॉम absolute necessity, okay, sorry, from absolute necessity to freedom, okay, जो चेंज टा हला ह्यूमन रो कोन हला से आगरु absolute necessity पई कोन थिला completely depend थिला नेचर ऊपर बट लेटर ऑन से कोन हला एब्सोल्यूट फ्रीडम निजर जहा इच्छा से करि पाला एबे आमे निज इच्छा रे घर बनाउचंती निज इच्छा रे रास्ता बनाउचंती निजर कंप्लीट जहा भी नेसेसिटी अछि आमे ताको फुलफिल करि पाउचंती। ओके ओके एमिति क्वेश्चन भी आसी पारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ले डिफरेंशिएट बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। ओके आमे टिके ता ऊपर फोकस करबा एबे तो जेतेबेले भी क्वेश्चन पड़िबो ऑलवेज जानि थाओ दुईटा कॉलम तमे टान दबो ए और बी हेडिंग दे दो फिजिकल जियोग्राफी एंड बायो जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी रो बी आसी पारे तुम मान को डिफरेंशिएट करबा पई तो तुम मान जानि थाओ बेस गुडा को कोन जानि नियो देन तुम मान आराम से चारटा पॉइंट के तीनटा पॉइंट लिखि पारिबो। तो फर्स्ट ऑलवेज थाए मीनिंग फिजिकल जियोग्राफी रो मीनिंग कोन इट इज डेवलप्ड एज ए सब्जेक्ट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नले तुम और यार इजी वाला अंडरस्टैंडिंग वाला किछ डेफिनेशन देई पारिबो जोटा भी तुम मान सुविधा होचे मन रखिया पई। Whereas biogeography it is the result of an interface between physical geography and the human geography. It's a bridge between physical geography and human geography. ये पढ़ेला कौन फर्स्ट पॉइंट मीनिंग रे। सेकंड हला ब्रांचेस तो फिजिकल जियोग्राफी रे अलग अलग ब्रांचेस अछि व्हिच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेचर whereas biogeography रे ऑलरेडी तुम जानछो जू प्लांट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जाव को जाय। ओके ये हला सेकंड। थर्ड हला सब्जेक्ट मैटर कोन पढंती हम एथरे ए स्टडीज एबायोटिक एलिमेंट माने जहार जीवन नाही एबायोटिक कंपोनेंट कोइ परिबो एलिमेंट कोइ परिबो whereas biogeography deals with biotic element। ओके सो दिस इज ए इजी क्वेश्चन टू रिमेंबर बस तुम माने बेसिक्स गुडा को माने रखो तुम माने आराम से एग्जाम रे अपियर करि परिबो। आउट डिफरेंशिएट टाइप रो क्वेश्चन हम एठी डील करबा सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच रो कोन एटा एक्चुअली पचरा जाय फ्रीक्वेंटली। ओके काना ये क्वेश्चन रो टिके वैल्यू अधिक अछि दिस मस्ट बी नोन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके सो प्रो फाउंडर के फर्स्ट ला हम्बोल्ट को नाटा मेंशन करिवो। ओके रीजनल अप्रोच के करचंदी कार्ल रिटर करछ तो ये होला हमरो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हला मेथोडोलॉजी जे कोन के केमिति कंसीडर करे तो माने ऑलरेडी जानछो सिस्टमैटिक अप्रोच कोन करे फेनोमेना को कंसीडर करे तारा वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट को नेकी whereas रीजनल अप्रोच कोन करे गोटे पीस ऑफ अर्थ को चूज करे एंड ता भीतर थिबा ऑल द फेनोमेना को से स्टडी करे। सो तुम माने मेथोडोलॉजी रे कोन करे इन सिस्टमैटिक अप्रोच ए फेनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज ए होल whereas in the regional approach the world is divided into regions and different hierarchical levels माने सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को नेकी कोन ए स्टडी टा करा जाई थाए। नेक्स्ट ला एग्जांपल मन रख थाओ नेचर वाला कोनोसी जिंस तमे जदी सिस्टमैटिक अप्रोच रे लिखुछ दैट विल द बेस्ट एग्जांपल किबा रेनफॉल हे परिबो बुझि परछो रेन फॉरेस्ट हे परिबो सॉइल हे परिबो बुझि परछो क्लाइमेट हे परिबो whereas रीजनल अप्रोच रे तुम माने गोटे पर्टिकुलर एरिया नबा को पड़ियो कंसीडरेशन ले डेजर्ट हो प्लेन हो रेन फॉरेस्ट हो। ओके इवन इफ तमे जदी मॉडर्न डे रो कोनोसी भुवनेश्वर प्लांट सिटी हेडा गोटे दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रीजनल अप्रोच किबा चंडीगढ़ एमिति भी तमे नै पारिबो। ओके long answer type questions so this question must be written in 100 to 120 words ठीक है लॉन्ग टाइप था बेसी पड़े नहीं
जदि चैप्टर गोटे भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आसला तो पॉसिबिलिटी बहुत कम अछि जे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आसीबो बोली। फिर भी आमे ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन को डिस्कस करिनवा। तो प्रथम होची आज साइंटिफिक डिसिप्लिन विथ हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इज ज्योग्राफी कंसर्न। देखो कोर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी ऊपर एटा कंप्लीटली डिपेंडेंट जोटा कि कोन व्हाट where and why. So you have to elaborate this thing. What कौन denote करे, where कौन denote करे and why कौन denote करे। देखो टिके रिवर्स ऑर्डर रे आसीबा। एमिति टाइप रो क्वेश्चन रे तमाने गोटे इंट्रोडक्टरी लाइन तमाने दवा को पड़िबो जोथिरे कोन तमाने लिखिबो जे जियोग्राफी डील्स विथ 3 कोर क्वेश्चंस। ओके नो की इट्स अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कैटेगराइज 3 क्वेश्चंस। ओके जियोग्राफी कंसर्न रे कोन फर्स्ट ला व्हाट रे कोन आसीबो डेफिनेशन आसीबो इट गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए एंटिटी और ए फेनोमेना। नेक्स्ट ला वेयर रे कोन आसीबो स्पेशियल डाटा आसीबो जे को जगह रे से अकर हुए। देन व्हाट और वेयर रो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करिया पई बा कॉज एंड इफेक्ट को डिस्क्राइब करिया पई कोन आसे व्हाई आसे। तो तुम माने तीनटा सब हेडिंग बनै परियो व्हाट वेयर एंड व्हाई रो आसे क्वेश्चन कोन डिस्क्राइब करे। जे तुमको डिटेल्ड वाला दरकार मु तुमको आंसर शीट रे प्रोवाइड कर देबी लिखाई थिबा आंसर। बट आई होप तुम माने आगे बुझी जाओ सब्जेक्ट मैटर कोन देन निजो लैंग्वेज लिखि पारे। देखो सब्जेक्ट मैटर किछि अलगा नहीं सब बडे व्हाट वेयर व्हाई होबो किंतु ता परे जो डिस्क्रिप्शन ला तमे दोछो तमे निजो लैंग्वेज रे देले हेडा बेटर होबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच एक्सप्रेस द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। देखो चारिटा ही जिंस अछि। ओके रीजनल अप्रोच जदि एमिति क्वेश्चन आसे फर्स्ट तुम माने कार्ल रिटन को नाम मेंशन करिवो। कार्ल रिटन जे कि प्रो फाउंडर थिले रीजनल अप्रोच रो। देन तुम माने कोन रीजनल मैक्रो मेसो एंड कोन माइक्रो तीनटा आगे मेंशन करियो। पॉइंट नंबर 1 सेकंड अब रीजनल डेवलपमेंट नेक्स्ट अब रीजनल एनालिसिस बुझ परछो। तो चारिटा पार्ट अछि ताको तुम माने कंप्लीटली लिखिबो। तो इंट्रोडक्शन रे ऑलवेज कार्ल रिटन को नाम मेंशन करिवो। ओके एंड लास्ट रे कोन जो कॉमन एस्पेक्ट अछि कॉमन अछि जेमति कि फिलोसफी अछि और मेथड एंड टेक्नोलॉजी अछि ताको भी तुम माने रीजनल अप्रोच रे मेंशन करिवो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी अंडर बायोजियोग्राफी। एटा ऑलरेडी हमें तीन थर खंडे पढ़ी सालरेनी। तीनटा ही अछि प्लांट जियोग्राफी जू जियोग्राफी एंड इकोलॉजी। तो एमिति क्वेश्चन ले आगे तुम माने बायोजियोग्राफी रो इंट्रोडक्शन दे दबो। इट इज द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी और इट इज ए ब्रिज बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। Later on तुम स्टार्ट करियो क्वेश्चन आंसर कोन देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी अंडर बायोजियोग्राफी। देन पॉइंट नंबर 1 ले स्टार्ट करियो प्लांट जियोग्राफी। इट डील्स विथ ऑल द कोन फ्लोरा एंड प्लांट स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन द कोन एनवायरनमेंट और अर्थ सरफेस बुझ परछो तांकर इंपोर्टेंस कोन सिग्निफिकेंस कोन बुझ परछो ए सब जिंस विषय लिखबार थाए। नेक्स्ट जू जियोग्राफी रे तुम माने फौना विषय लिखिबो all the plant animal species and their relationship with their habitat or their nature बुझी परछो। थर्ड रे आसीबो इकोलॉजी। इकोलॉजी रे कोन करिवो रिलेशनशिप बतेबो तमे। इकोलॉजी रे तमे एनवायरनमेंट आर्ट करिवो जे एनवायरनमेंट रे कोन कोन पॉसिबिलिटी अछि तमे पॉल्यूशन को ऐड करि परिबो बुझी परछो। तमे हैबिटेट बायोडायवर्सिटी ए सब जिंस को तमे कोथरे ऐड करिवो इकोलॉजी रे ऐड करिवो। सो दिस इज ए प्रीटी इजी क्वेश्चन। बायोजियोग्राफी तीनटा पार्ट है सब मोस्टली देखो तुम माने जहां भी देखो सब तीन तीनटा कि चार चारटा ही कोन डिवीजन सब आसीबो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ले। बस डिस्क्रिप्शन निज लैंग्वेज रे भल रे लिखिबा को पड़िबो। ओके नेक्स्ट व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। एटा देखो एटा बहुत बड़ा जिंस तुम माने को फिलोसफी कम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू रे देखो। फिजिकल जियोग्राफी रे चारटा डोमेन अछि लिथोस्फीयर अछि हाइड्रोस्फीयर अछि एटमॉस्फेयर अछि एंड बायोस्फीयर अछि। ओके सो चारिटा जाकर मीनिंग तुम ऑलरेडी जानछो। लिथोस्फीयर हला ऑलवेज कोन लैंड बेस्ड क्रस्ट। ओके जे लिथोस्फीयर डील करे का से तो हमें जहां ऊपर बसवास करूचंती। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर हला वाटर रियल। ओके जोटा कि कोन ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन एवरी फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस विषय से डील करे। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर जोटा कि गैस रिलेटेड डील करता है। ओके एंड ये हला बेसिक स्फीयर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। Whereas जब तुम डिविजन करिवो कंप्लीटली जियोमॉर्फोलॉजी फास्ट आसीबो जे कि लैंडफॉर्म विषय रे तुमको बुझाय। नेक्स्ट आसीबो सॉइल नेक्स्ट आसीबो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशेनोग्राफी। तो जो चारिटा स्फीयर अछि से चारिटा स्फीयर को नहीं कि कोन देखो लिथोस्फीयर जियोमॉर्फोलॉजी ओके हाइड्रोस्फीयर बुझि परछो ओशेनोग्राफी बुझलो।
तो एटमॉस्फेयर से क्लाइमेट जो लिंक अच्छे एंड जो बायोस्फीयर बंचिला सी होची कल्मिनेट ऑफ ऑल द आइडियाज जो तीनटा जिनस ऊपर आमे डिस्कस कले ताको मिसई की गोटे जोन बने जोठी की लाइफ सपोर्ट आसे दैट विल बी कवर्ड अंडर व्हाट बायोस्फीयर सो तो फिजिकल ज्योग्राफी इंपोर्टेंस ये है कि नॉलेज अबाउट द स्पीयर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हेल्प अस इन व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस केमिति को रिसर्च को कहीं आम यूज करवा केमिति कले आमको फायदा ही हम नेचर हार्म हेनी से सब जिन कौन फिजिकल ज्योग्राफी नॉलेज रे ही आसी थाए ओके so you understand the point by what the importance of physical geography means तो तमें आगे फिजिकल ज्योग्राफी डेफिनेशन दब देन तार ब्रांचेस रे कौन कौन पढ़ती दब देन आम तार इंपोर्टेंस जाना जे कि कहीं पढ़ा ओके दैट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स बोथ आर डायनामिक नॉट स्टैटिक दिस इज ए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जे हमको एक्सप्लेन करिवार अछि फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ कौन बोथ आर डायनामिक देखो डायनामिक मीनिंग है एवर चेंजिंग ओके सो एवर चेंजिंग केमिति हुए एटा हमें इजीली करि परिबा ना देखो फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर देखो फिजिकल फैक्टर रे जहा जा अछि लैंड फॉर्म रेगुलरली चेंज होसी दे आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर माउंटेन अछि केतरा जेमते हिमालय एग्जांपल तम मानबो जोटा कि धीरे धीरे हाइट बढ़ुछि वेयर एज देयर आर सम प्लेन एरिया जोटी कि रिवर कौन कर इरोजन करके तार हाइट कम हो बुझी पारछ इरोजन है कि पहाड़ रो बहुत बड़ा सेडिमेंट आछि जोटा पे कि कोन प्लेन रो बेले बेले मीन सी लेवल हाइट बढ़ी बढ़ी जाउछि सो दैट विल बी कवर्ड अंडर व्हाट फिजिकल पार्ट वेयर एज ह्यूमन फैक्टर रे कोन अछि पॉपुलेशन चेंज होछि सोसाइटी चेंज होछि सो यू हैव टू डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई दिस डायनामिक पार्ट इज जस्टिफाइड ओके तो हमको या ही डिस्क्राइब करियर अछि केमिति फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर एवर चेंजिंग अछंती आमे एक्चुअली एग्जांपल दबा हिमालय रे तमने एग्जांपल दे परिबो प्लेन एरिया सब दे परिबो वेयर एज ह्यूमन रे दे परिबो रिलीजियस बा डेमोग्राफिक चेंज विषय रे लिखि परिबो ओके एबे हमें नेक्स्ट आसबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इजी दिस इज द सब पार्ट ऑफ दिस वन ओके चारिटा जो मेन मेन अछि तमे ताको ही कोन करबो मेंशन करबो व्हाट मैटर्स आर स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी एटा हमें डिस्कस करनथले ह्यूमन ज्योग्राफी आगे तुम मैंने बेसिक डेफिनेशन दे देबो इट स्टडीज द मैन नेचर रिलेशनशिप ओए कोन आराम से ओटे सिंपल डेफिनेशन देला परे देयर आर मेनी सब ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी व्हिच आर द सिंथेसिस वर्जन ऑफ सोशल साइंसेस तो स्टार्ट करि परबो हिस्ट्री जियोग्राफी कल्चर बुझि परछो एई सब जिंस तुम ऐड करियो पॉपुलेशन डेमोग्राफी तो 4 रु 5 टा तुम मैंने मिनिमम मन रखो ह्यूमन ज्योग्राफी रो ब्रांचेस गुड़ा ओके सब मन रखा दरकार नहीं बट इजी इजी अच्छी है जियोग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन एटा भी तुम सोशल साइंस और नेचुरल साइंस सहित निजर कौन एस्टाब्लिश कर जियोग्राफी रो रिलेशनशिप कौन अच्छी देख गोटे सिंपल तुमको बतई दूची तीनटा क्वेश्चन है सिमिलर फॉर्मेट रे हला इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन आउ ब्रांचेस मोर और लेस रिलेटेड केमिति बुझिबा हला तो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन ले कोन गोटे आसीबो सोशल साइंस ओके आ गोटे आसीबो फिजिकल बा खाली जोटा साइंस पढ़ो सब माने ओके तो सोशल साइंस रे ह्यूमन ज्योग्राफी ऑलवेज आसीबो ओके जेमति कि पॉपुलेशन इकोनॉमी सोशल सो ये सब साइड खाली जियोग्राफी लगे दबो ये सब कोन हे ह्यूमनिस्टिक ह्यूमन जियोग्राफी रो कोन हे पार्ट गुडा सब डिवीजन हे वेयर एज नॉर्मल साइंस देखिबो कोन सोशल साइंस जो नॉर्मल साइंस है जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी डील कला का से तो obviously lithosphere similarly hydrology से हे जिवो ओसेनोग्राफी देन आसीबो सॉइल बुझि परछ सॉइल हैला पेडोलॉजी
ओके सो दुईटा जाकर सब्जेक्ट मैटर सेम अच्छी बस तुम मैंने कौन तार प्रेजेंटेशन टिके चेंज करार अच्छी इंटीग्रेशन लगे स्टार्ट कर सोशल साइंस ना ब्रांचेस रे स्टार्ट कर कौन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी ना ओके देखो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से ही फरक आउ किसी अधिक नहीं जियोग्राफर्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल फॉर ए कंट्री ओके देखो जियोग्राफर को आम गोटे एजेंट हिसाब से नवा देखो जियोग्राफर गोटे पर्सन से कौन करे आम इच ब्रांच को लेकिन स्टडी करें जदि आम फिजिकल पार्ट को नवा फिजिकल पार्ट रे फर्स्ट है नॉलेज अबाउट रिसोर्सेस ओके किए रखे जियोग्राफर रखे एंड से प्रेजेंट भी करे आ कौन फेनोमेना सो इतरे हुए कौन गोटे जियोग्राफर जितेबाला डिस्क्राइब करे व्हाई ए फेनोमेना अकर एट ए प्लेस तार पैटर्न कौन कहीं सेटा होउछि केमिति ताको मिटिगेट करि हबो जदि सेटा ह्यूमन को हार्म करूछि सो सेमिति जदि तुम एग्जांपल नबो फिजिकल देखो मेटेरियोलॉजी रे हम एग्जांपल नबा क्लाइमेट केमिति वेदर रो इंपैक्ट कौन जदि किछि खराब इंपैक्ट अछि ताको आमे कौन केमिति मिटिगेट करबा बा कम करबा से सब जिंस कौन फिजिकल पार्ट रे कवर हो जाउछि कार जियोग्राफर एक्चुअली रोल ऑफ जियोग्राफर हम सो नेक्स्ट है मिनरल रो नॉलेज जदि हमको को रिसोर्स को टाइप रो रिसोर्स कोठी अछि आमे जानि गले तार जुडिशियस यूज जानि गले जोटा कि कहार रोल जियोग्राफर रो गोटे कंट्री केमिति से रिसोर्सेस को यूज करि परिबो निजर कोन डेवलपमेंट पई एंड टू गेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एई टर्म टा हमें पढिचंती लास्ट रे ये सब अटेंड करिवारे कहार योगदान अछि जियोग्राफर रो अछि हला नेक्स्ट जदि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट को देखिबा ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट रे कोन आसीबो पॉपुलेशन चेंज तार इंपैक्ट काहेकि होची पॉल्यूशन कोन मूव पुश फैक्टर पुल फैक्टर माइग्रेशन रो इंपैक्ट कोन गोटे रीजन रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हेई परिबो कि नहीं स्कोप अछि कि नहीं सो से सब कोन ह्यूमन ज्योग्राफी रे कवर हेई जाय ट्रेडिंग बा tertiary activities different type of activities hala industries ये हैला ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर रे आ गोटे स्पेशल अकाउंट अछि एनवायरनमेंट बा इकोलॉजी सो इथिरे हमें गोटे ज्योग्राफी रो कंट्रीब्यूशन कोन अछि गोटे कंट्री रे सेठी प्रेजेंट थिबा ऑल द फ्लोरा एंड फौना एंड देयर इंपोर्टेंस से विषय रे कोन जियोग्राफर रो गोटे रोल अछि कोन अछि रोल जानिबा नेशनल पार्क अछि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि ए सब रो इंपोर्टेंस आज वेल तांगर कंजर्वेशन लोक मन को अवेयरनेस स्प्रेड करेबा प्रेजेंट गवर्नमेंट ए सुटेबल पॉलिसी टू अडॉप्ट तो ए सब जिंस कोन जियोग्राफर रो हेई थाय देखो मोस्टली जियोग्राफर रो काम होला नॉलेज बेस्ड ओके सो कहवा को गले इनफॉरमेशन इज पावर so that information is with whom geographer okay so तुम माने निजो पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखि परियो जहा भी तुम माने माइंड रे आसुची so these are all the possible long answer type questions there are certain questions जोटा कि तुमको माने कोन on the spot पचारि पारे एक्चुअली एमती टाइप रो क्वेश्चन उडा को पढिबार पॉसिबिलिटी कम अछि फिर भी हमें से विषय टे पढि नवा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जहाँ कह जाए एथिरे कोन थाए तुम मानको प्रेजेंट सिनेरियो ऊपर थाए क्वेश्चन नॉर्मल एमती क्वेश्चन आसे नाही जदि भी आसे तुम माने निजे लिखि पारिबो सेथिरे कारण गोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करबा एमती बट पॉसिबिलिटी जे एमती क्वेश्चन आसीबो नाही यू ऑब्जर्व एवरी डे इन योर सराउंडिंग दैट देयर इज अ वेरिएशन इन नेचुरल एज वेल एज कल्चरल फेनोमेना all the trees are not the same variety all the birds and animals you see are different all these different elements are found on the earth can you argue that geography is the study of aerial differentiation so एमिति questions रो deep meaning गोटे particular concept ही थाए जेमते कि ए क्वेश्चन ला aerial differentiation तो ए क्वेश्चन जदि एमिति आसे त माने कोन करबो aerial differentiation को बेस करके निज एरिया को केस स्टडी हिसाब रे नै कि कोन कोन तमे चेंजेस देखुचो ताको ही लिखिबार थाए
So these kind of question are very rare in the exam. एमती पढ़े ना कि जदि भी पढ़ला तुम आगे डीप मीनिंग ए क्वेश्चन ला जानिबो जानला परे ताकू बेस करके लिखिबो जेंति सेकंड क्वेश्चन देखिबा हाउ मच टाइम यू टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस देखो जो टेम्पोरल एंड स्पेशल सिंथेसिस अछि ए ता ऊपर डिपेंड करे ता विषय तुम आराम से लिख परियो बस तुम मन को क्वेश्चन रो मोटिव कोन जानिबार अछि ओके नेक्स्ट एमती आउ दु तीनटा क्वेश्चन अछि यू हैव सीन एलिफेंट डियर अर्थवर्म can you describe some of the important feature of the sphere simply biosphere या विषय से कंप्लीटली पचारछि ओके बायोजियोग्राफी रो गोटे पार्ट इकोलॉजी बा एनवायरनमेंट से विषय त माने अधिक एठी लिखबार अछि डू यू सेलिब्रेट वन मोस्ट ऑफ इन योर स्कूल व्हाई डू यू प्लांट सो मेनी ट्रीज हाउ डू द ट्री मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस दिस इज आल्सो रिलेटेड टू बायोजियोग्राफी तो तुमको इकोलॉजिकल बैलेंस विषय लिखबार अछि जे ट्री रो महत्व कोन अछि से हमको कोन दिए नो कि इकोलॉजी पई कोन कराए जेमति कि तुम आराम से पिला पढ़ी पढ़ी आसथिबो CO2 से एब्जॉर्ब करे फोटोसिंथेसिस पई हमको कोन ऑक्सीजन दे थाए जोता पई कि हमरो एटमॉस्फेयर रे टेंपरेचर बैलेंस हुए नो कि आमे जदि गछ काटी नबा ग्लोबल वार्मिंग अधिक बढ़ी जीवो मेल्ट हेबो कोन आज वाला देखो तुम माने प्लांट को कोन उटा ऑटोट्रॉफ्स हिसाब रे देखो से हमको फूड जोगाए हैबिटेट जोगाए बुझि परछो से सब जिंस तुम एथरे मेंशन करिवार अछि What is the important cultural feature do you observe while going to school? This is also very similar to that question. Are they similar or dissimilar? A real differentiation. Okay. You have seen a tennis ball, a cricket ball, an orange ball, and pumpkin. Which one among the resemble the shape of the earth? Why do we choose this particular item to describe the shape of earth? एटा टिके गोटे स्पेशल हे गला क्वेश्चन तमन को बुझे दोची अर्थ रो पर्टिकुलर से प्योरली स्फीयर नुहे बहुत आबड़ खाबड़ अछि कहना देखो डिप्रेशन बा ओशन ओशन रो जदि तमे पानी हटे दबा हेडो खाला भलिया तो हे जीवो ना बुझि परछो कि नहीं सो अर्थ कोन अछि टिके चेप्टा अछि बुझि परछो आमे अर्थ को एमिति इमेजिन करि करि आछंती बुझि परछो whereas अर्थ एते भी कोन तो माने ग्लोब देखथिबो एंती टाइप टिके विजुअलाइज से हेई थाए whereas अर्थ कोन हुए जदि तमे यार डिस्टेंस से कम अछि एटा टिके बाहर आड़ को बाहर जाई छी एंती बुझि परछो टिके चेप्टा जेमिति कि गोटे ऑरेंज रे कोन थाए एम गोटे खालो था एम दे दियो कोन एंती खालो था नहीं एमती टाइप रो नॉर्मली ऑरेंज ता थाए तो कहयो गले कोन लॉन्गिट्यूडनली टिके अधिक बड़ अछि लैटिट्यूडनली कोन ये कम अछि बुझि परछ चेप्टा टिके अछि ओके सो क्वेश्चन अनुसार ए क्रिकेट बॉल कंप्लीट स्फीयर होछ टेनिस बॉल सेम स्फीयर बट ऑरेंज रे कोन होछि इक्वेटर आड़ को बॉल जाउ ठेला बडिया सिमिलर शेप अछि जोटा पे कि अर्थ को जिओइड बा ग्लोबॉइड कहै जाय अर्थ शेप कोन जिओइड तुम ये डिस्क्रिप्शन ले कौन दे पारिबो जे अर्थ कंप्लीट स्फेरिकल नुहे इट इज अनइवन बुझि परछ अर्थ रो सरफेस होची अनइवन बट जदि हमें ताको ओवरऑल फिगर रे देखिबा इक्वेटोरियल कोन विड्थ टिके अधिक अछि बट पोल डिस्टेंस कम अछि ओके so that's all about all the question that we that can be asked in your exam I think this is sufficient for any student to appear in your exam तुम माने बस एति मन रखो बुकिश नॉलेज बा बुकिश लैंग्वेज सब बळे इंपोर्टेंट न थाय तुम जे निजे अंडरस्टैंड कर जइचो ताको तुम निजे ओन वर्ड से लिखिले बी मार्क मिली पारिबो एंड आज पर द वेटेज एक चैप्टर 5 to 10 ही मैक्स पढ़ी पारिबो तो पॉसिबली गोटे रु दुईटा एमसीक्यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ी पारे न पढ़ी पारे बुझि परछो एंड जो क्वेश्चन अच्छे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी एंड डिफरेंशिएशन सेमती क्वेश्चन गुड़ा टिके तुम अधिक ध्यान रखिबो से गुड़ा तुम जेमती इजी अछि मन रखि पारिबो आराम से अपियर करिवो एग्जाम रे पढ़ले ओके सो दैट्स ऑल द क्वेश्चन जदि आउ काहा को कोनोसी क्वेश्चन आसु थाए मुंड रे बा ताकू क्वेश्चन किछि बुझी न आस्थाय तुम माने मेंशन करि पारिबो कमेंट सेक्शन ले आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रा मु तुमने बुझेली तार कंप्लीटली रिटन फॉर्म मु पीडीएफ फॉर्मेट रे प्रोवाइड कर देबी जोटा कि तुम माने ग्रुप रे बा ऐप रे तुम माने पाई परिबो सो आई होप दिस क्लास वुड बी फ्रूटफुल टू यू
and all the best if any of the question that is discussed over here would come here exam. Okay, thank you, have a nice day.